No equality without promotion, right for voices, reservation is in proposal. Actually, Hello. Hello. they cannot get because of environment, their family circumstances. So at the time, they are putting their best efforts, even though after that they are not getting their suitable positions. So we should take up this as a logically we should take up with the government and all organizations and to see that ensure that we should uh, for top positions also not to restrict at the bottom level. So for giving this opportunity, thank you to uh, uh, Mulivasi Kalyan. Thank you. हमारे सामने रखने के लिए और मैं बताना चाहूंगी हमारा मैटर्स को आईआरएस में गवर्नमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी कस्टम्स में और फाउंडर पार्टी में और वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट मैं सबका आमंत्रित करती हूँ आपके जय मूल निवासी, जय भीम, जय हिंद. I am very happy to be here. First of all, I should thank Mr. Tilak for reconnecting me to BAMSF and its sister organizations after a long time. And just I met Mr. Dhruv, the president of BAMSF, and I also met our college senior, Mr. Gangadhar, who was earlier the BAMSF president. And this morning, otherwise a pleasant August morning, otherwise very sultry. Visakhapatnam is very sultry for all those who have come from other places, North India. It's very hot and outside it is pleasant because of the cyclonic weather. I hope all those who have come from outside have a pleasant stay and journey here. And I'm very happy because I myself a Mool Nivasi. And Mr. Nayak used to work projects, Port Prasad is here now. Has come back. Mr. Nayak is Balaji. And he is the one who first introduced me to BAMSF while I was additional commissioner working in Vizag Customs. And we had many sessions of why all this. I was quite impressed that employees from these communities, Pichde Wagwala, and always they are at the receiving end. Often they are graded very badly by the superiors. And they need their rightful opportunities in the power sharing. And it's really an applaudable effort by all of you. And not many people will sponsor events by BAMSF because people from Mool Nivasis are not rich. So bringing this BAMSF and its sister organizations to this level and conducting in a very nice meeting is not easy. So before I talk on issues, I should actually put on record done by you people.
and I wish you to continue. You should also with other organizations. That will go a long way because we have met persisting. So this should continue. What I would like to say, Mr. Dhruv also is from Chhattisgarh, Raipur. Regarding vision of Moolnivasi, I often Vishakhapatnam, 15 years. Ever since I keep following what Bansap is doing and how this gentleman has, this photo was never seen earlier. It has been brought back into the limelight. I think nobody is clapping for your own success. Before I get into the reservations and other beautiful topics you have, because the topics are really privatization, the promotions, these are all the denial of share in the power. And we have just read the preamble of the Constitution, which our Moolnivasi Ambedkar ji drafted very, very aptly, and nobody has the guts to shake it off even after 75 years of their efforts. How strongly they laid the foundation, the essence of Constitution brought into one page, easily one can by heart. So this, we are not able to even get it even 75 years after the independence. It's because of a couple of reasons. One is the other side do not wish to share it. The other side does not wish to share power. And the second is the other side has no capacity to pull it. Adukunte ichtar bicham. Power should never be begged. Power should be snatched. Power should be, some people Telugu adukunte bichmestar. Manam adukkovam nundi lakkovam రావాలి మనం. क्या बोलते हैं हिंदी में? छीनना. Power has to be. So I would request, since Bank President is also here, let us set the vision much bigger. And I'm not talking as not a practitioner. I got the civil services when OBC reservation was not there. I did 104 rank. And Mr. Tilak knows how we laid the foundation in 84, 88. We started a club called Pledge Club. And many people laughed at it. What is this Pledge Club? But later they realized that that was my stepping stone to cracking the civil service examination. And after that, from Jain to Kakinada, dozens of civil servants came in. Till then, nobody was writing civil service. Everybody was writing GRE, GMAT, IES exam, railway. No engineer was ever trying to write the civil service exam. So we need to develop capacities. So my interaction with Balaji Naik, still I really quote is not today. He was very disappointed. Ramaraji, you should join. I told, I'm a group officer. I have to go. I have to interact with many people. I'll work on your ideology. So this requesting we have been seeing it. So from requesting to snatching, competing, the tug of war. We are not able to create our financial, intellectual, we have done it. Organize.
You have to educate. Don't know we have done well, isn't it? We have learned from Ambedkar's Nara. He has given that educate, organize, and agitate. So we are not able to agitate well. So all of you, I think, since Moon Nivasi, we know, माछ पकड़ना थोड़ा पड़ेगा. माछ पकड़ना है तो पानी पहले निकालना है और पानी को डिस्टर्ब करना है, माछ मिलेगा. So we have to now disturb the balance. Today there is a nice power balance in the entire the society. They co-opted some of our own brethren. We did not give them the opposite party, but they have co-opted our own people. Our own people, like the axe cutting the woods. So axe, Godallo na kara, ataluka advida annattu. So the axe is cutting us, but with the support of the axe handle. గొడ్డలకి కర్ర ఉంటుంది, ఆ కర్ర పిడి లేకపోతే గొడ్డలు కొట్టగలదా చెట్లని. సో these people are so smart to co-opt us and to destroy us. So my friend just spoke about reservations in promotions for the OBCs. I think the Mool Nivasi organization should take it a note, because I had been the president of IRS Association and one of my colleagues from Bombay is here. Here are the days. Yeah, he is from the customs. So I was the president of IRS Association. So I know what the tantrams, the Manuwadi people play. So as the president, I first ensured that the APARs, earlier it used to be called ACR, they should be written on time. So today the APARs are online ho gaya. All the APARs are online. Because these APARs were kept for 10 years or 5 years, they were the handle to squeeze these Mool Nivasis, especially. The 56J, you see this government's dismissals under 56J, most people are from the Mool Nivasi background. We have not challenged it. And UPSC civil list, you get the ranks, isn't it? The first ranks will get the open category, comes the OBC, then comes the SC, ST, isn't it? But when you take it, if you are a group officer, you say you are roster, you are supposed to be one opening for OC or that roster points, then OBC, then SC. Isn't it? Hope I made a point here. You understand? The roster points are not made even for the class 1 officers. It is, let us say IAS has got 100 posts. The first 52 will be OC. It should not be like that, isn't it? The first 5 slots, number 5, up to 5 should be OC. Then 6th, 7th slot should be OBC. Then up to 10th they should fill. This is how they should fill. So our people are losing, because most people from the SC, ST, OBCs, they join very late in the service because they are not knowing the opportunities. They lose out. So the first thing before you press for the OBC reservations in the promotions, please set right the rosters. By the time we realized, I started quitting the service. I went to Andhra Pradesh Bhavan as a resident commissioner. So I didn't stay as the president of all India, that IRS. Had I been there, I would have fought for it and I would have got it introduced. But it has been long since it is, I'm leaving it to you, because even for the normal roster banana maybe, they are playing tantrums because our people do not know. You know, in Group A level, people are not organized. Is BAMSF and other organizations, so most of them are non-gadgeted and gadgeted. Group A, Group B and Group C and Group D officers. Is it right? So Group A officers are very seldom associated for fear of victimization. So please make it a point. Now that BAMSF has gone a long way, it should be boldly associate more Group A officers.
because you know the other group officers are associated with other organizations of the who is that Manwadis. So it is M versus M. This rebalancing has to be done by a tug of war, not by begging. For that, we need to be more articulate. We need to be more articulate. What do you mean by more articulate? You may say that if we are hungry, we cannot ask nicely. Because the Mollevasis cannot be very articulate, pleasantly asking, bargaining nicely. I'll give one example. Let us say Putin and Trump, they were meeting the other day. They were very pleasant, though they were having their forces get ready for fight. Even Zelensky and Putin, tomorrow they meet, they will not be showing their animosity. So we need to be more polished at the leadership level. When you deal with these people, the other side of the people, the more Nivasi leadership should be so well trained that you should not show your unpleasantness, animosity towards them. Often I see our people blurt out their anger. I know we are angry. Not the 75 years of independent India. It has been for generations. We were sidelined, we were given this and that. So the OBC reservations will be valid. The SC/ST reservations will be valid and useful only when the government recruits its quota, isn't it? The government has stopped recruiting. Say, initially when Ambedkar said that 10 years reservations, no government, that was the time of Congress, no government in India started reservation policy. Again, these people were to fight, isn't it? Have they started? Today when you go to this Manwadi, they say, original Ambedkar constitution was there for 10 years. They have been extending. What is this? So, our children now, really constitution mein 10 saal hai, why it has been extended? But they don't know that in spirit they killed it. They never implemented the reservations the way they are supposed to be. Because they didn't want to share. అంత పంచుకోవాలనుకోవట్లేదు. ఈరోజు ఒక హరిజన్ కానీ ఒక ఆదివాసీ కానీ మంచి డ్రెస్సెస్ కానీ కారులో వెళ్తే అసూయపడే వాళ్ళు 100 మంది ఉంటారు. You have observed or not? So, ఎందుకంటే వాడు their mindset has been made that we are only here to rule. This has to change, not by appealing, not by simply brandishing coarse voices. It has to be by capacity. తగ్గపర్లు గెలవాలంటే ఏం చేయాలి? మనకి కండబలం ఉండాలి. But today is not the day of brute power. Today is the power of mental, artificial intelligence, computers. So, I request BAMSF to focus more on technologies, because today, let us say we have been fighting for reservations. We got OBC reservation. Tomorrow on, they will also give a reservation in promotions also. They will give everything. Even reservations in what you call this assemblies and parliament also. They say 50% lelo. But when you don't have money to fight elections, they will only put a proxy. Today you see most of the cases don't take it offense. Many cases the MLAs, the reserve category, they are appointed by some rich fellow from that area. Because BAMSF never funded any independent SC or ST MLA. Have you funded anybody? Because you can't fund because you're all government employees, isn't it? But you don't have any organization which can fund. Let us have independently thinking MLAs and MPs. A party will nominate somebody who is buttering them. That is the reason why, as a Mol Nivasi, I quit the service. I didn't want to join any party. We wanted a party of our own. It has been 6 years of my journey that I didn't want to join a party. I have tested with the party which I contested in the 2019 Lok Sabha election with Jansana party, but realized it is of no use if I don't want to become an MLA or MP, because I would have continued in service until 2027. I didn't want to become an MLA and MP BS2s, and you don't have an agenda setting. If you cannot set the agenda for us, what is the use of being in a party, you tell me? So,
I am practicing into the power politics because unless you take power, you cannot. మన చేతిలో కొండు ఉంటే కదా వడ్డించగలం. ఏమండి, ఎవరు వడ్డించగలరో వడ్డించేవాడు మనవాడు అయితే చివరి బంతిలో కూర్చున్నా మనకు భోజనం వస్తుంది. ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ ద वो क्या बोलते हैं हिंदी में इक्विवेलेंट है, the person who is serving the food, if is known to me, you will get food any time. But we are not knowing the fellow. The fellow will only say that, oh, no food is there. So the fundamental principle is privatization, non-recruitment is all are these people's agenda to deny the power to these people. Because they have seen, these are the Mulnivasis who are the technocrats, who are the weavers, who made the tools, who made the ships. What not you tell me, who made the sports, who made the missiles? So, but today where are we? In this forum I am proposing, we want economic reservation. What is that? I want sectors. In Andhra Pradesh, a beginning has been made. All the liquor shops, 10% are reserved for the toddy topping community. It's an eyewash. In our manifesto, in our party, Uttarandhra, we said 50% of the toddy wine shops will be given to those communities who either sell, brew or do the country liquor. Taking a cue, this government has given 10% of the wine shops and these things to. What I am saying is, India's 50% of the textile business is reserved for those weaving community. We agree or not? I want 50% of the Indian ports should be given to all the fishermen and those sea-based communities. Why should you privatize? These all people will buy it. Like Gangavaram port is there. Why can't it be purchased by all the fishermen together? All the fishing communities, India may come se come at least 10 crore population is there. Can't they own these, what do you say? I would say all the Antrik, the mechanical, this one, Vishwakarma and other communities. Why we are asking for reservation in jobs? We say, gentlemen, face value of the asset, instead of giving to Ambani, Adani or other people, Tatas and Birla. हम बिक मांगेंगे तो हम बिक ही मिलेगा. हमको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए. हमको क्या चाहिए? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. हम क्यों वी वांट ए वर्क अंडर हिम. ये तो हमको थोड़ा एजेंडा थोड़ा ऊपर सेट करना पड़ेगा. हम इससे रिजर्वेशन in any sense these people have undermined because no recruitment, and there is no recruitment means there is no need of any 50% or 49% reservation. So khatam ho gaya. We are not able to enjoy that. Could you do anything? Could we defeat the party? Successively they are winning because they have got paisa. If the Monlivasis cannot control the financial purse of this country, forget about it. I am just cautioning it because I have been inspired by this very idea of BAMSF because this BAMSF as a concept itself is very bold step by very long back. It has roots. It is preserved it. So what has brought you here won't take you further. There is this English saying, यहाँ तक जो लेके आया ऊपर नहीं पहुंचेगा. You want to scale Mount Everest? वो नेपाल तक जा सकता है आप जहाज में, जो एयरक्राफ्ट में, वहां से ले जाएगा रोड में, कोई कार ले जाएगा. बेस कैंप पे क्या करना है हमको? कोई जहाज ले जाएगा और कार ले जाएगा. So now the BAMSF has come to the base camp of Everest. So if you do not do it, there is no point. The same discussion I did it with Bangladesh. I go by that. I am practicing it from the last 6 years. I am the vice president of National Federation for New States.
बिकॉज हमारा लक्ष्य फेडरेशन का, जब हिंदुस्तान 100 साल का रिपब्लिक बनाएंगे, हमको स्वतंत्रता में कोई स्वतंत्रता हमारे लिए नहीं है। कोई स्वतंत्रता है क्या अगस्त 15 से? स्वतंत्रता मिला है क्या भोग से और एक्सप्लॉयटेशन से? स्वतंत्रता से कोई संबंध हमको नहीं है, हमको रिपब्लिक से संबंध है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट्स दिया है। कोई है क्या मूल निवासी? People carried both the sides of the religion. Only poor people were killed in the name of two countries. Can we celebrate such a? This one you tell me. We celebrate the Republic Day as our festival. Unless we are very, very different, कोई मानेगा नहीं. And let us all say, ये पोराटम, ये fight, words छोड़ दो. They should fight with us, not. Who should fight with us? We are the majority. We are sitting everywhere. If I stop using, how many of you are using BSNL mobile? How many of you, can you raise your hands? I am using one. Start using BSNL mobile if you want privatization to be stopped. My batchmate used to be the BSNL chairman, MD was. Okay, I used to go and tell him that, lady, don't privatize. He told me very frankly that we are right sizing it to see that BSNL remains always. And today BSNL is giving the best offers. And we travel by rail. Let us travel by APSRTC, state RTCs, because we do something opposite. If you don't have ticket on a RTC bus, or cancel the trip. I don't read newspaper of published by all these fellows. I don't read. I don't watch TV channels. They are not our channels. Why you should give the eyeballs? Mahatma Gandhi ji ने हमको बताया ना, non-cooperation. Why are we cooperating with them? ये मंच से please do not cooperate, because as employees you cannot take part in politics. You stop reading the newspapers. You don't subscribe to the newspaper to your house. So that much extent your circulation कम हो जाएगा, advertisement revenue कम हो जाएगा. So they are only circulating venom against us. Reservation ठीक नहीं है. They are only promoting those people, isn't it? So the moment you stop watching these TVs, we have YouTube channels. See, India got independence and Dr. Ambedkar has got it because he has created alternative structures. If you don't think alternatively, if you don't say that I don't want reservation, please implement whatever is there. I want these ports to be, whatever port you are coming up, give it as a port meant for fishing communities, because all the shoreline is affected by the मच्छीकार लोगों को लिए कुछ नहीं मिल रहा है. उनका fishing, this one is being taken over by Japan and other countries. Like that, every industry. Why should we? So, मेरा ये request है and सुझाव भी है that मूल निवासी, the original inhabitants, and I am sure here caste nahi hai. Even Brahman, Kshatriya bhi aayega isme. I am not saying that मूल निवासी, unless those people from other land, whoever is here, later on they would have got some mantra tantra se Brahman ban gaya, Kshatriya ban gaya, or वो संस्कृताइजेशन प्रोसेस में ऊपर चला गया, वो कोई नहीं है. ये जो पहले से यहाँ है. And many of you would have noticed that Manvadi very smartly uses Vanvasi. वहाँ आदिवासी को, have you seen? And a lot of people have seen rebut किया from the organization of the SC, ST and other, the पिछड़े जाति से. Don't call them Vanvasi, because anybody who stays in this one will be Vanvasi. We are Adivasi. We are the original inhabitant of this place. And luckily, unlike Australia or Israel or any other country, where even in America, United States,
where the Mool Nivasis became minority, we are still the majority, isn't it? We are the, and Ambedkar ji has given a vote to us, isn't it? Please propagate that our people should not sell vote for liquor and note. As government employees, you can always influence your circles and friends that don't sell your vote, isn't it? How do we get into power? How do we elect our people? How do you snatch away power is more important, because there you distribute all power, political post, economic power, whatever reward, Bharat Ratna. You tell me how many people have become judges from Supreme Court, judges from OBC community? Is there one person there? Anybody, one person? Last 75 years? SC, ST में थोड़ा हो गया, because they wanted to show as a trophy. They will make somebody president. They won't make somebody prime minister or chief minister. Oh, they just want to make somebody a trophy that ये इनको बनाया हमने. In real sense, and my friend, human nature is, if you have power, you don't want to share. Okay, in घर में भी we fight to get our share of property and power, isn't it? Isn't it or not? If our parents are unfair to one son and the other son, or one daughter or the other daughter, what do? We arbitrate, we fight. The so-called Mahabharata happened, isn't it? The so-called, whether we agree or not, there is a, people read it. It's on property, isn't it? The share was not proper. So share is not normally given by these people. And to take away that one, you need to be like Pandavas. You should crush. You should take away that one. Unless we do that, all this privatization will go on, because they don't want 50% of SC, ST, BCs to come in, because they have already seen SCs, STs and OBCs coming in open category. They tried to include those into reservation category, but courts have said nothing, you can't do it. They have competed in the open category. You can't club them. So they have got other ways. I have only told about the job, but about the universities, areas where there is no reservations, PhD awards, all these government positions, public prosecutors, solicitor generals, advocate generals. Not many people from these communities who constitute 76% of this country have not got it. And I'm sure BAMSF, with its small beginnings, has come a very long way. My friend Gangadhar ji has told me that he has made it Mool Nivasi voluntary force with a very nice badge I've seen. And I'm sure it will go a long way, and those voluntary force should become, the number should be more and more. And I have been touring around India, because I am now the president and vice president of new states. India, we want 50 states. When India celebrates 100 years of republic in 2050, our slogan is 50, 50, 20, 50. 50 states, $50 trillion economy. In 2050, India should be #1 economy in the world, where the Mool Nivasi will have 76% of this $50 trillion. Will it sound nice? Our vision should be 50 means $36 trillion economy should be come from. It will not come from jobs. My friends, nobody has ever become rich by doing jobs. Everybody has become rich by other professions and business. Unless we have share in the business of this country, we will never be, we'll be underdogs. So let us please help. BAMSF and his organizations can help us, because the more states we have, the more CMs can be from Pichda Varg City. Because you can say that 50 states hai, sare open category hai, kyun isme BCEC nahi? The more governors, the more judges. So we want to have 50 states for a 150 crore population of Bharat. So with this,
I am truly inspired by Mansaf's ideology of making these people. But I don't know whether you have a political this one. People say BSP was a party, but I have seen it's still in the survival mode. It is having its own problems. All India footwork, but in the process, we need to have in the regional also where we are in large number of people are the Molnivasis. So vote is the astra. We have to use it as whatever you call it. And I wish this conference, third conference, Tritiya Rashtriya Congress, all the success in achieving its objects. And I wish all the best and happy return journey to all those who have come from other places. And I'll share my card and numbers when I interact with you. And I have worked in all over India. My friend Tilak has read about me. I have worked in the entire Bharat mein, West Coast, Mumbai, the southern side, Chennai, east side, Calcutta, north side, Delhi, Rohtak, then Kanpur, then Patna. So सारे आर्यावर्त में भी काम किया. So south, west में भी. I have lot many friends at very even lower level, apart from the IRS, IAS. So I keep meeting you whenever I am coming to that part of India. Since I am a political animal now, I am devoting completely to the politics and empowerment. And our goal is to have a backward class prime minister, backward class name, Mollivasi prime minister, rather, and by 2029 or 34. Will that sound good? A Mollivasi prime minister by 2029, Alawai to 2034. Will that sound good? To have 76% of nation's wealth shared by us, we need to have a prime minister, because only a prime minister of a Mollivasi prime minister can distribute. No other person can. Let us resolve through this conference that and pray whatever faith you have, whichever religion you profess, that we need to have a Mollivasi prime minister on his own strength, not by party of some party who foist and take away the rug in 2029 or 2034. Thank you very much. God bless. Jai Hind and Jai Bharat. Jai Pule ji and Jai Ambedkar. Jai Bhim. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, through MKKM, we are demanding, sir, not asking or begging. Our president, sir, will share our success stories, sir. Now, I invite our honorable guest, Mollivasi Gangadhar, sir, former national president BAMSE, अपने विचार हमारे सामने रखने के लिए. Dear friends and the dignitaries of the dais and of the dais, all of you, Jai Bhim, Jai Mollivasi, Jai Bharat, Jai Samvidhan. It is very critical for me to deliver my speech nor Hindi nor in Telugu, because only the people who are sitting here, they know only Hindi or Telugu. But the peculiar thing I am facing is I am not in a position to speak both in Hindi and Telugu also. So I may not convince you, I may not convey you
the whatever I am going to speak here, you may not be, but still I want to convince you with my little bit English language. You please concentrate to hear me very concentratedly. I am requesting you, please concentrate. I will deliver, I will speak only 15 to 20 minutes, rather less also. But I am requesting you, you please concentrate on the subject which I am going to speak to you. Okay? All are you accepting my proposal? Thank you. So I am welcoming all the dignitaries and all the cadre who are participating for this third National Convention of Mullivasi Karmachari Kalyan Mahasangh, which is now being held at in our state Andhra Pradesh, Visakhapatnam. I am congratulating all the cadre who are working for this convention or conference. Since last 3 to 4 days, I am congratulating all of these people. Now, today's inaugural session topic is demand for reservations to the OBCs in promotion. In promotions, we are demanding the reservation for the OBCs as a part of representation. So, reservation in promotion as a part of representation. You please, I am again requesting you, you please follow me, you please hear me very carefully, very concentratedly. I am repeatedly asking you. You may boring with me, but you please listen very carefully, very concentratedly, because it is a foreign language to all of us. That's why I am asking you. So the topic today's inaugural session's topic is demanding reservation for OBCs in promotions as a part of representation. This is the topic. So we are not asking any reservations for the jobs, for the educations, for the social backwardness. We are demanding the reservations for the promotions in the jobs. This is the demand. The MKKM is demanding. So that means we are getting reservations in the jobs, not as per the representation. We are the OBCs are 52% of the total population of India, but we are getting only 27% of reservations of OBCs in the education and as well as in employment. So this is the parity. As far as the history is concerned, the OBCs are empowered. The OBCs are entitled. The OBCs are given reservations at the instance, at the implementation of the Constitution itself. You must remind this thing.
Because in the Article 15.4, it is categorically and specifically mentioned that OBCs and SCs and STs should get special provisions if the state feels that is required. This is what written in the Constitution, that is Article 15.4. I am reading out the Article 15.4 what said. You please listen very carefully. But many people feels that only scheduled caste and scheduled tribe people are getting reservations through Constitution. Only for Mandal Commission only the OBCs are getting reservations. That is not correct. Because Article 15.4 is categorically and specifically mentioned. I am reading out the Article 15.4. That is, I am reading out. You please listen very carefully. Nothing in this article, that is Article 15.4, nothing in this article shall prevent the state. What it means? The state government or central government. State means not only state, it is either state government or central government. So nothing in this article shall prevent the state. Nobody can stop the state or central government as per this article from making any special provisions, any provision to whom? For the advancement of any socially, educationally backward classes of the citizens. Dhruv sir, you please stop that one. Stop. Okay. So, education, whoever the people residing in the country, in this country, whoever the socially and educationally backward people, they should give some special provisions. Who are they? Who are they socially and educationally backward people? They are the backward classes of the citizens, number one. Who are the backward classes of the citizens? Who are the backward classes of the citizens? Tell me. No SC, ST. Backward class, he specifically told the backward classes of the citizens. Only OBC people. Very categorically and specifically mentioned. But we are not taking that right spirit of the mentioning of the Dr. Baba Sahib Ambedkar. Very specifically and categorically mentioned. Whoever the socially and educationally backward classes of the citizens, and for the scheduled caste and scheduled tribes. He mentioned again scheduled caste and scheduled tribes. So that means he mentioned about OBCs and SCs and STs in the Article 15.4 itself. The state should provide special provisions to advancement of the socially and educationally backward people. That means all the people, the OBCs and SCs and STs, we got the reservation in 1950 itself. That we should understand this thing. Nobody is understanding. Everybody is telling that through the Mandal Commission only we are getting reservations. That is absolutely wrong. From the 1950 itself, we are getting reservations. But in the pamphlet itself, they are very, very correctly they are mentioned
Because of these Brahmanical forces, we are not getting reservations. We are not implementing the reservations for the OBCs since 1950. They are opposing. Even the Baba Sahib also resigned from the cabinet during the Constitute Assembly debates. When he is mentioned about the reservations about this article, during the debates also, the Sardar Vallabhai Patel, who is the OBC, who is the Mulnivasi of this country, he opposed vehemently. No, OBCs are not backward people. He is opposed in the Constitute Assembly debates. Even though for that purpose, Baba Sahib categorically put the Article 340. What Article 340 says? Article 340 says appointment of commission to investigate the conditions of the backward class. This is the Article 340. Conditions of the backward class people. This is the Article 340 says. One commission should be appointed. But after the formation of the first parliament, first government in 1950, not first parliament. So after the formation of the government, in that government, Baba Sahib was the law minister. So many times he appraised to the Prime Minister Jawaharlal Nehru also, but they are not constitute any committee regarding as per the Article 340. So many times, more than 8 times Baba Sahib proposed and given the representation also, you please appoint commission for finding out the conditions of the backward class people, OBC people. But they are not taking the demand of the Baba Sahib Ambedkar to the bottom of their heart. They are simply, what it means, they are simply neglecting. And at that time also, he proposed the Hindu Code Bill also. That also, they are not passing that bill in the parliament. Instead of passing that bill, even the Congress itself, they are accepting the debate in the parliament, even though they have the prime majority in the parliament. So, some 3 or 4 reasons, showing 3 or 4 reasons. Main reason is not constituting the committee for finding out of the conditions of the backward class people. He resigned from the parliament because of this thing only. We must understand, we must accept this thing. This is the one of the reasons. So from the 1950 onwards, even though the constitution is giving the opportunity to the OBC people for getting reservation, this is not implementing in true spirit. But in 1979, after so much of struggle, after so much of demands, after 20 years, almost all 20 years, they are appointed one commission, that is Mandal Commission. Even appointment of the Mandal Commission also given his report. After giving the report also, the 52% of the total population of the country
he is occupied with the backward class people. The Mandal Commission given that report. Even for that report also, the parliament or governments are not implementing reservation to the OBC people. So, the VP Singh government implemented first the reservation to the OBC people, that is in 1990. And after 20 years lapsing of the Mandal Commission report, the reservations for the OBC people are in. So from 1950 to 1940, 1990, so 40 years of lapse of, even the constitution is telling, even constitution is accepting, even constitution is provision, the reservations for the OBC people after 50 years, after 40 years, in 1990, OBC people are getting reservations. But immediately that government is fallen in 1991. Immediately in 1991, the anti-reservation movement is started through, even for Mandal Commission report against to this, that Mandira, what is that? Mandir, Ram Mandir, Radhayatra. That movement is started to what is that? To fool the Mullivasi Bhojan people. So this is another history. I don't want to go into the details. But here the point is why we are demanding the reservations in the promotions as a part of representation. This is the topic. So this is the history I am telling you. This is the background history. We must understand. The OBC people are not getting reservations not from the 1990. The constitution itself is incorporated as per the article 15.4 that OBCs and SCs and STs are getting, or they are empowered to get the reservations from the 1950 January 26th itself. But these Brahmanical forces vehemently, categorically, directly opposed the reservations to the OBC people. This we must propagate. And today's topic is why we are asking for the reservations in promotions for the OBC people. Because we are, as per the article 16.4, the scheduled caste people are getting reservations in promotions also, not OBC people. Why this parity? Why this is because of the Sardar Vallabhbhai Patel only. At that time also, Baba Sahib is very ready to incorporate the reservations in promotions to the OBCs also. But these Brahmanical forces in the Constituent Assembly also, they vehemently opposed. For time being, Baba Sahib put all these efforts and put a commission for through the article 340, just study, put a commission on this backward classes commission. As per the article 340, please study the conditions of the backward people. That's why he put the 340 article, because of this. Otherwise, like article 15.4, we the people of India, the original inhabitants of this country, the sons of the soil, the OBC people, they should also get the promotions, the reservations in the promotion. But because of these Brahmanical forces, we are not got the reservations at that time itself. That's why the MKKM is taking up this task. Very rightly, they are taking this agitational program to get the reservation. Like our Metta Ramarao sir tell, no
rights will gain without bargaining. We get the rights, we get our constitutional rights not by begging, not by bargaining, but with struggle only. The MKKM, Mullivasi Karmachari Kalyan Mahasangh, is rightly taken up the issue. And we will all support. Definitely, the bombs of people, the bombs of other offshoot wing people, and the like-minded people of all the Mullivasi organization should support this slogan, should support this demand. Definitely, this is the genuine demand because of some critical conditions during the assembly debates. Baba Sahib faced so many difficult conditions. Each and every part, each and every article, whenever come across with the discussions during the constitute assembly debates, he is facing so many difficulties to convince the people. More than 290 people. Everybody, they even don't know the ABCDs of the articles, the context of the articles, the background of that article. We have 395 articles in the Constitution. Each and every article is debated, is already in the Constitutional Assembly. This article 15.4 and 16.4 are also debated more than 5 days. With great difficulty, he inscribed these articles in the Constitution. So, dear friends, whatever the task, whatever the demand which is taken by the MKKM, we should support, we will support, we should propagate, and we should go ahead with this slogan. This is very important also. Shall I conclude or any? Okay, I will conclude. Okay, I will conclude. So this is Baba Sahib already so many times he told that struggle, more struggle, and struggle, more struggle. Then only we will get the success. So with this slogan, I am concluding my speech. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Mullivasi, Jai Bharat, Jai Samir. थैंक यू सो मच सर। आज के हमारे 2 चीफ गेस्ट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मुनिवासी आदिरेड्डी वासु सर और गेस्ट ऑफ ऑनर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमलापुरम कॉन्स्टिट्यूंसी Madhu Balya Ganti Harish sir. They could not attend our inaugural session because one of the cabinet minister's daughter engagement is planned today. Entire officials, entire ministers, MLAs and MPs are going there to attend the function. So both of them could not attend this inaugural function. They are also trained by our Gangadhar sir and Tilak sir in the cadre camp, and they are also very committed towards our Mulnivasi movement, but they could not attend for the special reason. Now I invite Mulnivasi Aril Dhruv sir, BAMSEF National President, to address this occasion.
जय भीम जय मूल निवासी। मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मंचस्थ अतिथिगण और इस सेशन के अध्यक्षता कर रहे हैं मूल निवासी दही वाले साहब, सभागार में उपस्थित सभी मूल निवासी साथियों, आज का विषय है अन्य पिछड़ा वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण क्यों नहीं। डिमांड फॉर रिजर्वेशन टू द ओबीसी इन प्रमोशन एज पार्ट ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन। साथियों, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, जैसा कि आपने बापसेप और आप सभी आपसुटविन को उनके गतिविधि को जानते हैं, उसमें जो महासंघ का जो कार्यशैली है, मूल रूप से कर्मचारी अधिकारियों की सेवा शर्तें, उनके हक अधिकार, उनका अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन के इश्यूज को लेकर के, इनका जो कार्यशैली होता है वो एजुकेशनल फॉर्म में होता है और प्रबंधन के सामने, गवर्नमेंट के सामने डिस्प्यूट रेस करना और जरूरत पड़ी तो कोर्ट, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में जब डिस्प्यूट रेस होता है, कोर्ट को पावर होता है उसको सॉल्व करने का। मूल रूप से हमारे MKKM के जो साथी है उनको रेस करना, उसी टर्म में ये एक ओबीसी रिजर्वेशन का इशू आपने सब्जेक्ट में लाया। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसको समझने के लिए हमें एक तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी समझना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है इसके पीछे, और डिफरेंट कोर्ट केसेस भी रेस हुआ समय समय पर, और इन सभी को समझने के बाद हम ये पाते हैं कि ये इशू कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पॉपुलेशन के संदर्भ में देखें भारत देश में, वैसे डेटा ऑथेंटिक तो अभी वर्तमान का नहीं है, लेकिन 52% आबादी की मान्यता है। हो सकता है यदि आने वाली सेंसस में इसको सही तरीके से गणना की जाए तो वैसे ये संख्या 60% के आसपास की होनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले जो आरक्षण 1902 में साहू जी महाराज के प्रेसिडेंसी में मिला था, और उसमें हमने देखा कि उनके 20 साल के कार्यकाल के दौरान जो 50% बैकवर्ड के लिए, नॉन ब्राह्मण के लिए जो रिजर्वेशन लागू की गई थी उस समय, ब्राह्मण, प्रभु, सेनवी और फॉरवर्ड क्लास को छोड़ करके बाकी लोगों के लिए, तो उस समय के जो सिविल सर्विसेज में जो स्थितियां बनी थी, 50% रिजर्वेशन लागू होने के पहले उनके सिविल सर्विसेज में जो लगभग उस समय 69 के आसपास पदें हुआ करती थी, जिसमें करीब 90% से ज्यादा लोग ग्रामीण हुआ करते। जब वो रिजर्वेशन लागू हुआ 50% का, तो 20 साल के अंदर वो जो परसेंटेज था, रिप्रेजेंटेशन का जो परसेंटेज था, वो उल्टा हो गया। 90% से अधिक लोग नॉन ब्राह्मण लोग आए और
ये जो बदलाव जो है वास्तविक में उस समय उनके कार्यकाल में जो वो ऑर्डर था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था उस समय का रिजर्वेशन के संदर्भ में, उसके इम्प्लीमेंटेशन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वो 20 साल के अंदर 100% वो अचीव कर पाए। आज हम 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद से हमारे सामने जो स्थिति है, खास करके रिप्रेजेंटेशन को लेकर के एसटी एससी के रिजर्वेशन कंटिन्यू चला है, उसके बाद भी वो अभी तक उस पैमाने पर अचीव नहीं हो पाया है। और ओबीसी के मामले में, ओबीसी का जैसा चर्चा में आया, ओबीसी के मामले में तो बहुत ही पुअर है, जबकि आबादी के दृष्टिकोण से आधी आबादी ओबीसी है। तो जब तक ओबीसी समुदाय को रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा, तो इस देश के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सही मायने में समता, समानता, बंधुता स्थापित नहीं की जा सकती। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो रहा था, आर्टिकल 340 बोलते हैं जिसको, उस समय आर्टिकल 301 था, उसमें नहीं हुआ। कमीशन बनाने का जो प्रावधान था इसके अंदर में, लेकिन प्रमुख रूप से जो एचवी कामत उस समय अपने मत रख रहे थे, क्योंकि रिजर्वेशन के इश्यूज पे जब बात हो रही थी 10 वर्ष के लिए रखा जाए खास करके पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर, तो कामत जी कहते हैं कि हो सकता है कि 10 साल के बाद देश में कोई ऐसा वर्ग न रहे। यदि संविधान का जो प्रावधान आ रहा था उसको सही मायने में लागू किया जाए, तो 10 वर्ष के बाद कोई ऐसा वर्ग न बचे जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हो रहे हो। क्योंकि हमारे समक्ष सोवियत रूस का उदाहरण है। सोवियत रूस ने 10-15 वर्षों में वहां की निरक्षरता का अंत कर दिया था और जनता के निम्नतम लोग काफी उच्च स्तर पर आ गए। ये उनका कहना था। और हमारे अपने प्राचीन महानता और अपने सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान के पृष्ठभूमि के होते हुए यह आकांक्षा हम रख सकते हैं, ये उनका कहना था। मतलब जब इस आर्टिकल को लेकर के बात जो आशा रखी जा रही थी वहां के सदस्यों द्वारा, एक सदस्य थे जो पंडित ठाकुरदास भार्गव जी, वो इस आर्टिकल को अपने शब्दों में कह रहे थे कि मैं इसे संविधान की आत्मा कहूंगा। यह वास्तव में पिछड़ी हुई जातियों की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है और इस प्रकार अपने पिछले पापों को धोएंगे। और यदि कोई जाति सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक रूप में पिछड़ी हुई रहती है तो फिर 10-15 वर्ष का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, बल्कि जब तक वे सामान्य स्तर पर ना ले आया जाए तब तक उन्हें सुविधा देते रहना चाहिए। तो ये उस समय के वर्जन थे। तो साथियों, जो पिछड़ी हुई जातियों की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, ऐसा कहने के पीछे की मंशा को हमको समझना चाहिए कि निश्चित रूप से यदि 10 साल के अंदर बाबा साहब भी ऐसा सोच रहे थे उस समय, यदि इसको सही मायने में अमल की जाए तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो उस संदर्भ में यदि हमारे ये मूल निवासी आबादी जिसको कह रहे हैं उसके प्रति सही मायने में ये
इम्प्लीमेंट हुआ रहता तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 10 साल तो क्या, उसके प्रावधान को बनाने में, कानून को बनाने में ही कई साल लग गए, जिसमें 1953 में करीब काका कालेलकर कमीशन बनी, और काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं हो सका। उनके अध्यक्ष ने उसको उस समय उसके खिलाफ में फिर अलग से पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को, और इस तरीके से वो पहला कमीशन जो है वो षड्यंत्र के, उनके जो इंटेंशन के शिकार हो जाता है। और बहुत लंबे समय बाद मंडल कमीशन आता है, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होती है। लेकिन एक बात थी उस समय काका कालेलकर कमीशन में, एक अच्छा रिकमेंडेशन उनका था कि कास्ट वाइज इनोमरेशन होना चाहिए। 1931 में लास्ट में हुई थी, 1961 में होना चाहिए, ये उस समय बात आई थी। और फिर मंडल कमीशन बनी। मंडल कमीशन 79 में अपॉइंट होता है, तो लगभग 40 साल, मतलब संविधान सभा में हमारे जो उस समय के थी वो 10 वर्ष के अंदर परिवर्तन की उम्मीद रख रहे थे, लेकिन प्रावधान आते आते, कानूनी रूप में प्रावधान आते आते 40 वर्ष लग गए। इस तरीके से ये ओबीसी रिजर्वेशन की जर्नी होती है। और यदि इसको आर्टिकल के अंदर देखें तो आर्टिकल में, जिसको आर्टिकल 16(4), 15(4) जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आया, उसमें लिखा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक के रूप में, बैकवर्ड क्लास सिटीजन के रूप में। इसके अंदर में सारे एसटी, एससी और ओबीसी को भी कंसीडर किया गया। तो इस तरीके से ऑलरेडी प्रावधान था, लेकिन जो कमीशन बन रही थी वो कमीशन में क्योंकि एसटी, एससी जैसे उनकी लिस्ट नहीं बनी थी, ओबीसी की शेड्यूल नहीं, लिस्ट नहीं बनी थी, तो वो लिस्ट बनाने के लिए कमीशन बनाना था। कमीशन इसको बनाने में 40 साल लगे। और जब 40 साल बाद लिस्ट आई, उसके बाद विभिन्न कोर्ट में मामला गया, तो एक इम्पॉर्टेंट और इवेंट्स है जो हिस्ट्री का, उसको समझना चाहिए कि 1977 में जब मंडल कमीशन इंप्लीमेंट होने के पहले, ये जनता दल की सरकार थी, सीएम समय राम नरेश यादव जी थे। तो 20 अगस्त 1977 को अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन का ऑर्डर हुआ यूपी में, और इसके बेसिस पे ओबीसी को वहां पर रिजर्वेशन मिला स्टेट के अंदर। और 78 में एक भर्ती हुई यूपी पीएससी का, जिसमें लगभग 23 ओबीसी का पद भरा जाना था।
है वो आइडेंटिफाई नहीं। तो संविधान के प्रावधानों में आने के समय भी यही बात हो रही थी कि वो कौन है, ओबीसी, एससी एसटी तो है, ओबीसी कौन लोग हैं, उस समय भी आइडेंटिफाई नहीं था। उसके लिए कमीशन बना। कमीशन में काका कलकर कमीशन में करीब 3000 के आसपास 2900 समथिंग कास्ट को आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन उसको वो उस समय कमीशन के रिपोर्ट को लागू नहीं किए गए। उनके प्रेसिडेंट जो खुद ब्राह्मण थे काका कलकर, उसने पंडित नेहरू जी को पत्र लिखते हैं उसके खिलाफ में, मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो उस समय आइडेंटिफाई होने के बाद भी उसको डिनाई कर दिया गया। इस तरीके से कोर्ट में 87 में भी आइडेंटिफाई करने की बात कही गई, और इंदिरा साहनी के केसेस में भी जब मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट कर रहे थे उस समय फिर यही बातें आई कि ये जो डाटा है ओबीसी की जो डाटा है वो 1931 के बेसिस पे है और बहुत लंबा, बहुत पुरानी डाटा है। इसको फिर से डाटा को एनालाइज करना चाहिए। मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर के सरकार भी, सरकार से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बार बार ये बातें होती रहती है कि डाटा नहीं है, डाटा को एनालाइज करना चाहिए। ऐसे बार बार जजमेंट में आया। इसके बाद भी हमारे देश के अंदर खासकर 70 के दशक के बाद में बहुत सारे संगठनें आई, और सारे संगठनों के संज्ञान में भी आया होगा, ऐसा नहीं आया होगा ऐसा हम नहीं मानते, आया होगा। जाति संगठनों हैं, समुदाय के संगठन हैं, उनके संज्ञान में भी आया होगा, लेकिन इसको किसी ने भी सकारात्मक ढंग से नहीं लिया। तो रिप्रेजेंटेशन में जो आर्टिकल 16(4) में आया, आर्टिकल 16(4) बोलता है
कि जितने हमारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए रोस्टर सिस्टम डिजाइन हुआ, और यहाँ के जितने भी जजमेंट और केसेस आए हैं उसमें आप देखेंगे खास करके रोस्टर को, जब पहले वैकेंसी बेस्ड रोस्टर होता था तो उसको एक महत्वपूर्ण जजमेंट है आर के सब्बरवाल का जजमेंट, तो आर के सब्बरवाल ने उसको पोस्ट बेस्ड रोस्टर बनाया। तो पोस्ट बेस्ड रोस्टर में क्लियरली मेंशन हो जाता है कि इतने पोस्ट जो है, जैसे सेंट्रल के दृष्टिकोण से देखे स्टेट में अलग अलग है, तो 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए और 15% कास्ट के लिए और 20% ओबीसी के लिए। तो जब तक ये भर नहीं जाता तब तक कोई भी फिल्टर नहीं लगाया जा सकता। तो अभी क्या हो रहा है, हमारे जो डिजाइन रोस्टर पॉइंट है उसके भरने के पहले वो फिल्टर लगाते हैं, खास करके बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया, जैसे एम नागराजन के जजमेंट आया तो उससे वो फिल्टर लगा करके फिल्टर करते हैं, जबकि जब तक ये पोस्ट ना भरी जाए या उसके लिए कैंडिडेट प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो जाते या ज्यादा मात्रा में नहीं हो जाते तब तक फिल्टर नहीं लगा जा सकते। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हमारे जितने पद है भरत जो है अभी रीच नहीं कर पाया है, उसको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो मुश्किल से 10 से 12% मिलेगा आंकड़ों में, उसके पहले ही वो कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देता है। तो इससे जो हमारा समानता का लक्ष्य है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और बाबा साहब कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता को स्टेब्लिश करने के पहले बंधुता का निर्माण आवश्यक है, और बंधुता जब तक हम उसको उसी स्पिरिट में लेकर के नहीं आएंगे, तो बंधुता क्या होता है, बंधुता में दो भाव होते, त्याग और स्वीकार। तो एक जो प्रिविलेज क्लास है जब तक त्यागेगा नहीं तब तक बंधुता को स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है हमारे, चाहे वो एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हो, उसमें जो प्रिविलेज क्लास है वो ओवर रिप्रेजेंटेड है, वो जब तक त्यागेगा नहीं। इसीलिए जो समानता का जो प्रावधान है उसके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत लेके आया। अदरवाइज समानता में किसी को आप डिस्क्रिमिनेट जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के हिसाब से आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन बंधुता के कंसेप्ट से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत लाया गया और रोस्टर सिस्टम से फिर उसको रिप्लेस करने की बात आई, और दुश्मनों ने अपने षड्यंत्रों को लगातार जारी रखा, और जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का जो शब्द है उससे उसने रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी बना दी। यानी उसने कमजोर लोगों द्वारा सवर्ण या फॉरवर्ड क्लास के लोगों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन का थ्योरी बनाई। सामान्यतः आप देखेंगे इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता कि कमजोर लोग सवर्णों के ऊपर अत्याचार करें, लेकिन जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी जो लाया उसको जस्ट उसको काउंटर करने के लिए लाया। और जितने हाई कोर्ट वगैरह में आप जजमेंट देख रहे हैं इसके खिलाफ में जितने जजमेंट आए हैं वो इसको रिजर्वेशन के प्रावधानों को शट डाउन करता है। तो इस तरीके से जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो अभी इंप्लीमेंट इस देश के अंदर नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमारे जो SC ST को भी नहीं मिल रहा है और OBC को भी नहीं मिल रहा है। तो आज का डिमांड है जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलना चाहिए। तो उसमें एक छोटी सी बात समझने की जरूरत है कि जब वो अपॉइंटमेंट में वो एक्सेप्ट करते हैं, पार्शियली एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन प्रमोशन में क्यों नहीं करते? क्योंकि अपॉइंटमेंट अपने आप में, जो प्रमोशन अपने आप में अपॉइंटमेंट है, यानी अपॉइंटमेंट बाय डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। जो प्रमोशन में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को ही एक सर्टेन क्राइटेरिया के तहत अपॉइंटमेंट करते हैं। जब हम
पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखेंगे तो हर लेवल पर अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट होता है, तो वो हमको निचले लेवल पे जाने के लिए उनको स्वीकार्य है, निचले लेवल के पदों में जाने के लिए स्वीकार्य है। लेकिन जहां पर हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपर लेवल पे जाने पर होता है, तो वहां पर हमको हमेशा वो लीगल प्रावधानों से गोल मोल करके हमको रोकते हैं। तो इस बात को हमको समझने की जरूरत है, और इस षड्यंत्रों को जब तक हम प्रोपोगेट नहीं करेंगे समाज जीवन में हमारे मूल निवासी बहुजनों के बीच में, तब तक इस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी सेशन हमारा लेट चालू हुआ है और क्लोजिंग की ओर भी जा रहे हैं, 12:30 तक है। तो मैं ज्यादा कुछ बातों को ना कहते हुए जस्ट जो कुछ पॉइंट आपके सामने रखा, इसको हमको करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि MKKM जो है, क्योंकि इनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि एम्प्लॉय वर्ग है उनके बीच में एक जन आंदोलन बनाने के लिए, और आज के समय पर जो प्रोविजन अभी इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया है दुश्मन वर्गों ने, इसके लिए केवल एकमात्र है कि हमको जुडिशरी से अभी हमको ये न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए जन आंदोलन चलाकर संविधान संशोधन की मांग करने की जरूरत है, संविधान संशोधन की जरूरत है, और जो एग्जिस्टिंग संविधान में प्रावधान है उसके क्रियान्वयन करने की जरूरत है। और जब तक अभी तक जो जितने हम अभी तक इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो DOPT के कुछ सर्कुलर से, वो ऑफिस मेमोरेंडम से उससे इम्प्लीमेंट हो रहा था, उसके जगह पर रिजर्वेशन एक्ट बनाने की जरूरत है। इसके लिए MKKM एक मूवमेंट चलाए और इस देश के अंदर में जनमत बना करके सारे राज्यों में लोगों को इसके लिए इकट्ठा करें, तभी जाकर के एक रिजर्वेशन एक्ट बनेगा। और संविधान संशोधन के जरिए जो प्रावधान आपने देखा इंदिरा साहनी में जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को उन्हें शट डाउन किया था, लेकिन बाद में 1995 में जो संशोधन हुआ उसमें केवल ST SC को प्रमोशन में रिजर्वेशन दी गई, OBC को छोड़ दी गई। जबकि प्रकरण जो है मंडल कमीशन का केस आया था इंदिरा साहनी में, तो OBC के लिए आया था और वो उस OBC के लिए उसने प्रमोशन को शट डाउन किया हुआ था। लेकिन 95 में जब संविधान संशोधन हुआ तो केवल ST SC के लिए हुआ, OBC को छोड़ दिया गया। इसलिए अभी OBC को भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन में संविधान संशोधन अमेंडमेंट करने आने के लिए जन आंदोलन चलाने के लिए कार्य करे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं MKKM के साथियों से। वो इस कार्य को अपने जिम्मेवारी पूर्वक देश भर में एक जिम्मेदारी के साथ कार्यक्रम चलाएंगे। इसी के साथ मैं इस कॉन्फ्रेंस के सफलता की कामना करता हूं। थैंक यू। जय भीम, जय मुनिवासी। थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करूंगी MKKM के नेशनल प्रेसिडेंट मूल निवासी पुष्पराज दहीवाले सर को देने के लिए ऑन आवर टॉपिक डिमांड फॉर रिजर्वेशंस टू द OBCs इन प्रमोशंस एज ए पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। Honorable dignitaries on the dais, respected Mool Nivasi Ramarao Mitta sir, respected Ariel Dhruva Saab, National President Bamsep, respected Lakshman ji, President SC/ST Welfare Association HPCL, and respected Gangadhar ji, former National President Bamsep. I heard a lot about Honorable Mitta sir in the department, and he was holding quite a powerful position in the department,
He was president of Direct IRS Officer Association. And while working there, he has left his mark on the to hear him. And I am quite impressed with his by his ideas, particularly his idea of having economic reservation to our Mulniwasi Bhojan community. And I'm sure, I'm certain that he will left his mark in politics also. I wish him all the best. Sir, this organization, Mulniwasi Karmachari Kalyan Mahasangha, was floated in 2016. And that time, our only objective was to safeguard and preserve the constitutional rights of Mulniwasi Bhojan employees. And there was a lot of pressure also from the internal pressure also from our organization, from BAMSEP, because until then, it was the policy of the BAMSEP that despite this organization being the organization of employees, it will not work for the betterment of employees. Because there was understanding there of the BAMSEP cadres that employees are a powerful section of our society, and there are several other organizations. When the BAMSEP was formed, there were 10,000, more than 10,000 organizations of employees were working for the employees. So we thought, our BAMSEP was thinking there is no need to do anything for the employees. And that is why we are not working for the employees. And we have decided that we will, because we thought that that time that the employees are already beneficiary of the movement of our forefathers. But large section of our society, they are not, the benefits of this movement has not reached to them. So it is our duty to deliver them benefits of our movement of our forefathers. So that is why BAMSEP was not working for the employees. But you know, since 1992, the government's policy, the ruling class policy, was started going against the interest of the employees. You know, since after 1992, the government has introduced policy of privatization. So that was causing a large, we sense that this policy is going to cause a large, huge detriment to the Mulniwasi Bhojan employees. Then, you know, in the 1992, after 1992, this Mandal Commission was implemented, and OBCs were given reservation in the services for the first time. So these ruling communities, they have sensed this danger, and they have started thinking that if this is going, if now OBCs are getting reservation, so their strength in the administration, the strength of SC/ST OBCs in the administration is going to increase, is going to be very strong, and then this ruling community, जो है, this ruling class, the Brahman, Baniya, Kshatriya class, who were holding strong grip over the administration, so that grip is going to last. So that is why they started doing anti SC/ST OBC activities, and that is why then we thought that now it is beyond the beyond the capacity of this organization, which were working locally in every department. We call them employees association. So we thought that this organization would not be able to tackle the issues of the employees in general, and that is why we felt need of forming this organization. That is why this organization came to brought into existence. Sir, second thing, when we formed this organization and we floated this organization, so then we identified certain problems. Those were the common problems of the employees.
of Mool Nivasi Bhojan Samaj. And Mool Nivasi Bhojan Samaj employees were suffering from this problem from all over the India. So we thought we should give this local organization would not be able to confront with this problem. So we thought we should give this organization all India character, broad-based character, and mass-based character. So we started organizing employees from all over India, be it the state government employees, central government employees, bank employees, public sector employees. So all we have made our base. And not only that, we have started organizing employees from all the cadres, from all the groups. So that is this way. Ours is the organization is broad-based organization, sir. And we have identified major 10 problems of the employees. So we find that these are from these problems, the employees of Mool Nivasi Bhojan Samaj are suffering. So we have identified that these problems of the employees are basically created by the ruling class. Basically, they are created by the ruling class, who are the beneficiaries of the social system of the India that is prevailing in India, and it is still persisting in India. That system we call Varna Vyavastha and Jati Vyavastha. So in the administration is occupied majoritarily by this class of people, and because of this, they are creating and they are carrying this mentality class because they were oppressing us from thousands of the years. And this mentality of oppression they are carrying in the administration, and since the administration is dominated by this person, so they are doing such type of activities, such type of against us. And because of this, the problems of employees, Mool Nivasi employees has been created. So first problem we have identified that कि मूल निवासी बहुजन समाज जो है उसको जो है यानी क्या बोलते हैं, जो उसके लिए जो है एक रिप्रेजेंटेशन एक्ट नहीं है. बिकॉज यू सी कि रिप्रेजेंटेशन जो अभी जो रिजर्वेशन जो मिलता है वो एक लिमिटेड रिजर्वेशन है, वो फुल प्रूफ रिजर्वेशन नहीं है. रिजर्वेशन इज ग्रांटेड अप टू द लोअर लेवल ऑफ क्लास 1 लेवल. एंड द सेड हैव सर हैज सेड कि जो जहां पे पॉलिसी डिसीजन होता है वहां पे हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है. यानी आप देखिए कि करीबन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एट ए टाइम जो है 95 जो है सेक्रेटरीज होते हैं, लेकिन इन 95 सेक्रेटरीज में हमारा SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम होता है. यू टेल मी सर, हाउ मेनी मेंबर्स of the board, our CBSE board, until now has become from our community, from SC ST OBC. I know there are 2-3 मैंने हमारा एक बोर्ड होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं. वो जो बोर्ड होता है वो जो हमारे डिपार्टमेंट की हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है. तो वहां पे मैं देखा कि आज तक SC OBC का कोई भी जो है आदमी, कोई भी जो है यानी वहां पे प्रमोट नहीं हुआ है. और SC के तो कम से कम एक तो मेरे नजर में, लेकिन OBC का कोई नहीं हुआ. तो इस तरह के जैसे रेलवे बोर्ड है कि फर्स्ट टाइम यू मस्ट हैव, बड़ा न्यूज हो गया था कि रेलवे बोर्ड का एक जो पहली बार जो है कोई चेयरमैन बना था शेड्यूल कास्ट का आदमी, तो बड़ा न्यूज़पेपर में आया कि यानी अब तक जो है रेलवे जो है क्या बोलते हैं 1856 से रेलवे जो है वहां पे इंडिया में है, लेकिन उसका चेयरमैन जो बनने के लिए, शेड्यूल कास्ट में उसका चेयरमैन बनने के लिए 200 साल लगे, मोर देन 200 ईयर्स. तो यह इन जैसी पोस्ट पे जो है वहां पे हमारा कोई जो है यानी क्या बोलते हैं कोई रिप्रेजेंटेशन हमारा जाता ही नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कोई होता ही नहीं है. तो डेट इज बिकॉज की जो रिजर्वेशन जो है जो हायर लेवल जो क्लास 1 की जो अभाव जो ग्रेड्स है, विद इन जो क्लास 1 की ग्रेड्स है वहां पे नहीं प्रोवाइड होता. तो इसी की वजह से जो है जब जो पॉलिसी बनती है तो वो पॉलिसी बनाने में हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं होता है. जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात ओबीसी को देने की आती है तो ओबीसी का कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो पॉलिसी मेकिंग में वहां पे नहीं होता. तो ये बहुत बड़ा जो है लैकुना जो है वहां पे है. और इसीलिए जो है वहां पे भी जो है विदिन यानी जो क्या बोलते हैं जो क्लास 1 यानी क्लास 1 के ऊपर भी जो है रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी है. हमारे कामले साहब यहाँ पे बैठे हैं, तो इनकी बैंक में एक केस हो गया था, दैट वाज अ स्ट्रेंज केस
कि यानी इन्होंने जो है वो बैंक, इनके जो SC/ST OBC एसोसिएशन है, तो उन्होंने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में फाइट करके जो है, जो इनका जो क्या पोस्ट होता है, आपका जो हमारा जो क्लास उनके ऊपर का जो पोस्ट होता है, वहां पे क्या आपके जो ग्रेड्स होते हैं वहां पे अलग अलग, तो विद इन दैट ग्रेड्स जो है प्रमोशन मिलेगा, रिजर्वेशन प्रमोशन मिलेगा। ये जजमेंट जो है ये सेंट्रल बैंक के जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन को लाई, लेकिन स्ट्रेंजली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो दे दिया, लेकिन देयर आफ्टर दे रियलाइज कि व्हाट ब्लंडर दे हैव कमिटेड एंड दे स्वो रिकॉल दैट केस। उन्होंने रिकॉल किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल किया। बहुत ही रियल होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो अपने किसी डिसीजन को रिकॉल करता है, रिव्यू करता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में दे हैव रिव्यूड देयर ओन जजमेंट और उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारा जो जजमेंट है वो गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो दैट वे यू कैन सी दैट कि जुडिशियरी जो है, ये जुडिशियल में भी जो है डोमिनेंस जो है वो उन्हीं माइंडसेट के लोगों का है, और इसी की वजह से जो है हमको जस्टिस जो है जुडिशियरी में भी नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हमने जो है एक तो रिप्रेजेंटेशन एक्ट की डिमांड करनी चाहिए, फिर हमने जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेशन देने की बात करनी चाहिए, पर्टिकुलर हायर जुडिशियरी में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन, इसकी बात हमने करनी चाहिए। एज सर हैज सेड कि ओबीसी के कितने बने हैं, अब तो सर ओबीसी के 2 बने हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है आज तक, वो भी कब बने हैं कि जो ओबीसी का मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर जो वो बी शंकरानंद जो है, व्हेन ही बिकम द लॉ मिनिस्टर, शिवशंकर, तो उन्होंने जो है ओबीसी के 2 जो है सुप्रीम कोर्ट जजेस को वहां पे अपॉइंट किया था। बिकॉज ऑफ दोस 2 जजेस who were forming the bench of that Indira Sahni case, this OBC has received this reservation because of their pressure. अदरवाइज वो भी उनको नहीं मिलता था, जो 50 साल के बाद में जो 27% रिजर्वेशन उनको मिला वो भी नहीं मिलता था। तो ये जुडिशियरी में रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, और हमने ये चाहा, हम लोग यार हमारी डिमांड बहुत ही हाई है, यानी some people will ridiculous कि we want representation in cabinet also, है ना, हमको कैबिनेट में भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब ये जो डिमांड है ये बहुत बड़ी डिमांड है, ये हमारे बस की बाहर की डिमांड, हाँ 75% मांग रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर जिस डिमांड, ये जो आप पढ़ोगे तो ये जो डिमांड जो थी ये हमारी डिमांड नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की डिमांड थी। ठीक है कि हमको जो है कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर की डिमांड थी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने आज तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको फाइट किया, और जब और वहां पे जो वोटिंग हुई, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो है वो वोटिंग जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाई, this 10 demands. Sir, this particular topic about the reservation of OBCs in the promotion. So we have deliberately, although this is one of the demand, but in this conference we have deliberately keep this particular this issue for discussion in public front. Sir, when we were planning this conference, then we have realized that कि शाहूजी महाराज in the month of July 1902, on 26 July 19, he has issued this government order of granting 50% reservation to the backward classes to his backward subject.
and he was the king, so his people were subject. They were not citizens. So he has announced 50% reservation to all backward classes. And from the backward classes, he omitted 4 categories of this caste, that is Brahmin, Parsis, Shenois, Shinvis, and the equivalent caste. So in the Shah Maharaj, in his state, his entire population, majority of the population, what 90% of the population as a तो अरे मीन्स कि अरे जो जैसे कि अभी सर ने बोला है, सर ने बोला है कि जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आई तब से ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन था, लेकिन उनको वो पहुंचने के लिए, उनको डिलीवर होने के लिए जो है 1992 तो डिलीवर 40 साल से ज्यादा जो समय जो है उनको डिलीवर होने में वो लगा। लेकिन शाहू जी महाराज ने 1902 में ही जो है वो ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन दिया था, शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन दिया था, और जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए भी रिजर्वेशन दिया था। तो हमको ऐसा लगा कि ये जो शाहू महाराज को जो ट्रिब्यूट के लिए जो है ये, अरे देयर वुड नॉट बी एनी बेटर इशू टू फिटिंग इशू टू क्या बोलते गिव ट्रिब्यूट टू शाहू जी महाराज। तो दैट इज व्हाई डेलिबरेटली वी हैव कीप दिस सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन। हमने इसलिए भी इसको लिया हुआ है कि आपने देखा कि ये पर्टिकुलर जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन का इशू है, तो दैट इज आल्सो क्रिएशन ऑफ द डिविजन, पर्टिकुलरली हाई डिविजन। ये इससे ऐसे हुआ है सर कि 1992 में जब ये इंदिरा गांधी का जजमेंट आया, तो दिस इशू ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन प्रमोशन वाज नॉट एट ऑल द इशू ऑफ डिसीजन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये कोई इशू था नहीं। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इतना डिसाइड करना था कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 1992 में OF निकाला फॉर ग्रांटिंग रिजर्वेशन टू द ओबीसी इन सर्विसेज, ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, इतना इशू उनके साथ। लेकिन उन्होंने जो है अपना जुरिडिक्शन को क्रॉस करके उन्होंने ये नया इशू फ्रेम किया और उन्होंने कहा कि ये जो SC ST को जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन बिफोर दैट इन सेवरल केसेस सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उन्होंने ये वैलिडेट किया था, इन्होंने ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। देयर वाज द केस ऑफ this famous case of this NM Thomas versus State of Kerala। तो वहां तो 7 जजेस बेंच ने इसको अपॉइंट किया था। एट दैट टाइम देयर वाज नो प्रोविजन, नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर गिविंग रिजर्वेशन प्रमोशन, बट सुप्रीम कोर्ट हैज कंस्टिट्यूट दैट कि आर्टिकल 16(4) जो एंट्री में रिजर्वेशन देता है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, थ्रू द गवर्नमेंट ऑर्डर, थ्रू द गवर्नमेंट GR, थ्रू द गवर्नमेंट OMs, SC ST were getting promotion from the very beginning। लेकिन जब ये इश्यू सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया, और ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ये इश्यू तब खड़ा नहीं करता था, तो उस वक्त जो है चूंकि SC ST को पहले से मिल रहा था, तो जब ये रिजर्वेशन जो है ये ओबीसी को मिलता था सर्विसेज में, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो है ये ओबीसी को भी लागू होता था, ओबीसी को भी ये रिजर्वेशन ट्रांसफर होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सेंस किया कि अगर इनको अगर देते हैं और अगर रिजर्वेशन जो है SC ST के रिजर्वेशन को कंट्रोल नहीं करते, तो इनको भी देना पड़ेगा, और इनको अगर देते हैं तो फिर हमारा जो डोमिनेंस है ये सर्विसेज में ये जो है ये जो निग्लिजिबल हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर इश्यू किया, खड़ा किया। तो ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही खड़ा किया गया इश्यू है। तो ये जो है ये ग्रेट इनजस्टिस जो है ये ओबीसी के ऊपर हो रहा है, क्योंकि SC and SCs आर गेटिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन बट OBCs आर नॉट। तो आप देखेंगे कि ये जो ओबीसी के साथ में जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बिकॉज आप यू सी कि जैसे 16(4) का जिक्र इन्होंने किया है, तो 16(4) में जो है जो रिजर्वेशन जो है वो सर्विसेज अंडर द स्टेट में प्रोवाइड किया गया। एंड ऑल द बैकवर्ड क्लास ऑफ द इंडिया, दैट रिजर्वेशन इज गिवन टू ऑल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया अंडर द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो वो जो बैकवर्ड क्लास में होता है, बैकवर्ड क्लास में SC भी आते हैं, बैकवर्ड क्लास में ST भी आते हैं, बैकवर्ड क्लास में OBC भी आते हैं। तो जब फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 16(4) दे आर बैकवर्ड। लेकिन फिर जो है दूसरा जो बदमाशी जो है OBC के साथ में उस वक्त जो रूलिंग का जो पार्टी थी या जो रूलिंग गवर्नमेंट था उन्होंने किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये रिजर्वेशन प्रमोशन को खत्म किया 1992 में 1995 में, तो फिर वहां पे क्या हो गया कि वहां पे बहुत बड़ा जो असंतोष जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एम्प्लॉयज में
निर्माण हुआ। और टू एड्रेस ये दिस क्या बोलते जो है जो डिसकंटेंट था, तो उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट है इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 16(4)A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 16(4)A में उन्होंने रिजर्वेशन किसको दिया? केवल एससी और एसटी को रिजर्वेशन प्रमोशन जो दिया वो एससी और एसटी को दिया। तो जो पहले ये क्या हो रहा है कि आर्टिकल 16(4) के लिए तो ओबीसी बैकवर्ड है, लेकिन आर्टिकल 16(4) के लिए जो है वो ओबीसी ए के लिए ओबीसी बैकवर्ड नहीं है। तो दिस इज द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट द ओबीसी। ये ओबीसी के साथ में बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हो रहा है। तो इसके लिए उसको दूर करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो इंजस्टिस जो ओबीसी को जो हो रहा है वो दूर करना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए जो है हमने ये टॉपिक लिया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो हम लोग जो इसको ले रहे हैं कि बिकॉज ऑफ जो है जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रमोशन होता है तो प्रमोशन किसके बेसिस पे होता है? प्रमोशन होता है सीनियरिटी लिस्ट के बेसिस के ऊपर। और सीनियरिटी लिस्ट कैसे बनती है? हाँ, जब आपकी अब जो अपॉइंटमेंट होती है और उस अपॉइंटमेंट में जो आपका जो मेरिट होता है उसके बेसिस पे जो है सीनियरिटी लिस्ट बनती है। तो क्या होता है कि सीनियरिटी लिस्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलने के कारण और एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन होने के कारण क्या होता है कि जब जनरल कैंडिडेट को प्रमोशन मिलता है तो एससी एसटी को भी प्रमोशन मिलता है। और ये प्रोविजन है जो मेरिट लिस्ट बनती है तो क्या होता है या सीनियरिटी लिस्ट बनती है तो क्या होता है पहले कि वहां पे पहले जनरल की सीटें भरी जाती है और फिर बाद में फिर रिजर्वेशन की पोस्ट भरी जाती है। तो क्या होता है कि मेरिट लिस्ट में भी जो इनिशियल मेरिट लिस्ट होती है उसमें भी और सीनियरिटी लिस्ट होती है उसमें भी जो एससी एसटी के जो ओबीसी के जो कैंडिडेट होते हैं वो हमेशा जनरल कैंडिडेट के नीचे रहते हैं। तो चूंकि एससी एसटी को प्रमोशन है, रिजर्वेशन प्रमोशन है, तो जब जनरल का प्रमोशन मिलता है जनरल को प्रमोशन मिलता है तो पैरेलली जो है वो एससी एसटी को भी प्रमोशन मिलता है। लेकिन ओबीसी को नहीं मिलता कि ओबीसी को वेट करना पड़ता है जब तक जनरल का लास्ट कैंडिडेट प्रमोट होता है तब तक ओबीसी को वेट करना पड़ता है प्रमोशन के लिए। तो ये बहुत बड़ा इंजस्टिस जो है वो ओबीसी के साथ में हो रहा है। तो इसीलिए इसको दूर करना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने जो ये टॉपिक जो है यहाँ पे डिस्कशन के लिए लिया है। 2 मिनट में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्योंकि सिंस आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम दिस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, so I should also deliberate on the other topics why we have kept this topic for discussion. तो यू सी कि हम लोग जो है बैकवर्ड जो हमारा जो बैकलॉग भरने की डिमांड हम लोग कर रहे हैं, ये बैकलॉग जो है आपने देखा होगा कि एवरी डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट जो है वो उसके सैंक्शन स्ट्रेंथ से जो है आधे से ज्यादा स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहा है। यानी देयर इज ए वास्ट गैप बिटवीन द वर्किंग स्ट्रेंथ एंड सैंक्शन स्ट्रेंथ इन एवरी डिपार्टमेंट। एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉट ओनली जो है गवर्नमेंट की इफिशियंसी तो सफर हिट हो ही नहीं, लेकिन जो एम्प्लॉयज की जो हेल्थ है इन जनरल वो भी हिट हो रही है। एंड इसमें क्या हो रहा है कि हमारे समाज में जो एलिजिबल कैंडिडेट है जो कैपेबल है नौकरी पाने के लिए है उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, तो समाज का भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत डिमांड थी समाज की तरफ से कि आपने जो है ये इशू भी टेकअप करना चाहिए, तो ये इशू हमने टेकअप किया। देन ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो इशू है ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इशू है सर, बिकॉज जो है कि हमने यानी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण इशू है कि वी हैव होल्ड अंटिल नाउ वी हैव होल्ड 3 conferences and we have discussed this issue in all the conferences. In every conferences we are discussing this issue, and wherever we get chance we are discussing this issue everywhere, in small forums, in big forums, in small conferences, in big conferences. So because आपको शायद पता होगा बहुत सारे लोग उसमें थे, हमने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी वहां पे 19 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड हमने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस बुलाई थी एंड बहुत सारे लोग वहां पे वो मौजूद होंगे आप में से भी। तो हमने वहां पे सर 2 एमपीज को बुलाया था हमारे, एंड बोथ द एमपीज वेयर केम फ्रॉम द मूवमेंट, आउटकम फ्रॉम द मूवमेंट। एक तो थे डॉक्टर पोल तिरुमावरम फ्रॉम मद्रास एंड एक जो थे रामजी गौतम बीएसपी राज्यसभा के दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमने वहां पे बुलाया उनको, वो आए और वहां पे उन्होंने ये कहा कि ये जो
प्राइवेटाइजेशन का जो विरोध करना ये यूजलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिस गवर्नमेंट इज वेरी एडamant, दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू एनीबॉडी। और वो प्राइवेटाइजेशन को करना चाहते हैं, और उसी वक्त उन्होंने जो है नई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, उन्होंने मॉनिटाइजेशन पॉलिसी डिक्लेयर की थी, वेयर बाय दे हैव डिक्लेयर्ड टू प्राइवेटाइज ऑल द पब्लिक सेक्टर एक्सेप्ट 4 पब्लिक सेक्टर, and they have declared to privatize all the public sector banks except 2 public sector bank। तो इन्होंने ये जो होलसेल जो है प्राइवेटाइजेशन का जो है जो पॉलिसी को अनाउंस किया था, तो we sense the danger, and that is why we call that conference on emergency basis where they come, and उन्होंने कहा कि ये प्राइवेटाइजेशन को विरोध करना ये भी बेकार है, इससे कोई हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये सुनने के मूड में नहीं है। तो उन्होंने ये सजेशन दिया कि प्राइवेटाइजेशन तो होके रहेगा, होने वाला है, तो क्या मिलता है, क्या अच्छा मिलता है, उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। यानी दे मीन कि भैया हमने इसको जो है अगर प्राइवेट में अगर रिजर्वेशन मिलता है तो उसके लिए हमने कुछ, देन एज यू सेड कि जैसे कि तो क्या बोलते हैं जो प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज है उनको जो सप्लाई होता है, जो प्रोक्यूरमेंट होती है, तो सप्लाई में हमको कुछ कोटा मिले, हाँ कुछ चार्ज, जैसे वो टाटा वाटा से कुछ कोटा मिले, 4-5% का कोटा मिले इसके प्रोक्यूरमेंट में, उनको जो रॉ मटेरियल लगता है उनके प्रोक्यूरमेंट में, उनके सप्लाई में कुछ कोटा मिले। तो इस तरह के जो है जो क्या बोलते हैं इस तरह की बातें जो है हमने अर्न करनी चाहिए, ये उनका मतलब था। ना मुझे बताइए कि जो इंडिया का जो कैपिटलिस्ट का क्लास है ये कहां से आया हुआ है? ये तो उसी बेनिफिशियरी क्लास से आया हुआ है जो सदियों से जो है उसका बेनिफिट ये सिस्टम, सोशल सिस्टम का बेनिफिट ले रहा है, और वो आप लोगों के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। तो और ये गवर्नमेंट किसका है? वो भी उन्हीं लोगों का है। तो ये गवर्नमेंट ने जो है ये 50 साल हो रहा है, लेकिन आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, आपका रिजर्वेशन पूरा नहीं भरा, तो क्या वो प्राइवेट को कंपेल करने वाला है रिजर्वेशन देने के लिए? और क्या वो आपको देने वाले हैं? वो तो निर्मला सीतारमण ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि ये जो प्राइवेटाइज हम लोग इंडस्ट्री करेंगे वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, नहीं हम इंडस्ट्रियल्स को कंपेल करेंगे कि वो आपको दे। तो ये बहुत बड़ा डेंजर हमको लगा कि ये जो है ये बहुत बड़ा डेंजर जो संकट जो है ये हमारे में आने वाला, हमारे समाज के ऊपर आने वाला है। ये जो नौकरियां तो है ये बहुत ही छोटी है, यानी ये जो प्राइवेटाइजेशन क्या, ये जो प्राइवेटाइजेशन का डेंजर ये है कि प्राइवेटाइजेशन जो है ये इस डेमोक्रेसी में, इस देश की जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको ही खत्म कर देने वाला। वो डॉक्टर अमिताभ कांत, ही वाज द सीईओ ऑफ द नीति आयोग, उसने तो ओपनली डिक्लेयर कर दिया, ये जो पॉलिसी होने के बाद में तुरंत उसने डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर किया उसने? कि ही सेड ओपनली कि ये जो गवर्नमेंट ने जो है बहुत ही बड़ी डेयरिंग दिखाई है, और गवर्नमेंट ने ये चाहता है कि वो इंटरनेशनली 5 ऐसे प्लेयर को खड़े करे जो इंटरनेशनली कॉम्पीट करे। व्हाट डज दिस मीन? क्या 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 मतलब इसका? कि इंटरनेशनली 5 लोगों को खड़ा करना, यानी 5 लोगों के हाथ में या कुछ गिने चुने के हाथ में इस देश की इकोनॉमी को सौंपना, यानी क्या मतलब होता है इसका? They want to establish oligarchy in this country, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गई है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गई, हम देख रहे हैं। They want to establish crony capitalism in the country। और सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि फैसिज्म, आपको मालूम है फैसिज्म? फैसिज्म किसने दिया इस वर्ड को? हाँ, मुसोलिनी। मुसोलिनी इज द क्या बोलते हैं क्रिएटर ऑफ द फैसिज्म। तो उसको किसने बोला कि फैसिज्म की डेफिनेशन क्या है बताओ, किसने बताओ? तो मुसोलिनी ने कहा था कि मर्जर ऑफ कॉर्पोरेशन विद द स्टेट इज फैसिज्म। यानी जहां पे कॉर्पोरेशन, यानी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और जो स्टेट यानी राज्य जिसको हम लोग कहते हैं, उसका जहां पर मर्जर होता है वो फैसिज्म होता है। तो थ्रू प्राइवेटाइजेशन दे वांट टू एस्टेब्लिश फैसिज्म इन दिस कंट्री। तो ये बहुत ही डेंजर है। ये केवल नौकरियों का हमारे, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट आवर जॉब्स, ये तो जॉब्स बहुत छोटे हैं, लेकिन जो लार्जर जो डेंजर जो इस कंट्री के ऊपर आने वाला है, डिक्टेटरशिप का, फैसिज्म का, ओलिगार्की का, क्रोनी कैपिटलिज्म का, वेलफेयर स्टेट जो एनविसाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो खत्म करने का, जो सोशलिज्म को खत्म करने का, ये बहुत ही बड़ा डेंजर है। और ये जो इसको लार्ज स्केल में डिस्कस होना बहुत जरूरी है, इसको मास मोबिलाइजेशन होना, इस इश्यू के ऊपर मास मोबिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमने ये जो इश्यू जो रखा है, ये हमने इसको जो हमारी जो डिमांड है उसको हम लोग सोशल एजेंडा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम लोग उसको पॉलिटिकल एजेंडा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग एवरी नाउ एंड देन, हम लोग जो पॉलिटिशियन को यहाँ पे बुलाते हैं कि सो दैट ये जो डिमांड को जो है वो
जो है वो पार्लियामेंट में टेकअप करे। हाँ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी तरफ ये डिमांड नहीं पहुंचाएंगे, हम उनकी तरफ ये डिमांड जरूर पहुंचाएंगे। हम उनके घर में जाके जो है इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन उनको देंगे एंड वी वुड डिस्कस दिस थिंग्स विद देम। So with this, thank you for listening to me very patiently, and I have taken slightly much more of your time, so I apologize for that. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Maharashtra. Now I invite Mulivasi Tilwalia sir to inaugurate our